Hello people, welcome to another brand new session of the Mission JEE 2022 series, and today we are here to decode some super duper important questions from a topic which is dreaded by maximum students because they find it complex in nature. Yes, I'm talking about complex numbers, which by the way is not that complex, trust me, and you will find that for yourself in today's session. So before we begin, fatafat se let me know if I am perfectly visible and audible to everyone out there. Quickly give me a green signal, people. Okay, so I'm not able to see the chat. Wait a second. Okay. Just 2 minutes, people. Yeah, now I am able to see your names. Hello, Ankit. So he is giving me a good to go. All is clear. Varsha, hi. Anupam, welcome. Malesh is here. Good evening, Varsha. Good evening, Aris. Math Education, welcome. Okay. Prashant is here. Good evening. Tech Apex, hello. Amarjeet, Anupam. Wow, Arun is here. Great to see that. Shailendra, hi. Alrighty, so now that so many of you have joined in, I guess we can get started. Hi Bhavya, good evening. Okie dokie. So, complex numbers, people, as you already know, is extremely important from JEE perspective, be it JEE Main or JEE Advanced. But having said that, I do agree that many students find it difficult to master, and that is understandable to me. क्योंकि complex numbers की ना अपनी एक भाषा है. It has its own language और उसके साथ tuning बैठाने में, उसके साथ comfortable होने में वक्त लगता है. That's justified. However, you know, as they say, consistency is the mother of mastery. If you are regularly studying your concepts, if you are consistent in practicing the questions, if you are systematic and organized in your preparation, then mark my words, people, you will not only be able to excel at this chapter, in fact, you will literally own it. And that will give a strong boost to all your happy hormones. And who doesn't like that? Correct? So with high hopes and loads of positivity, let's dive into the very first question of today's evening. Come on, let's get started. I am great, Joshua. Good to see you here. Welcome. Hi Suyash, hello Robin. Come on, let's get started with solving this question. It says A is a set which consists of all those angles theta belonging in the open interval minus pi by 2 to pi such that 3 plus 2 iota times sine theta upon 1 minus 2 iota times sine theta is purely imaginary. Read the statement very carefully. Then the sum of the elements sitting in set A is equal to what out of the given 4 options? सबसे पहली नजर जाती है इस एक्सप्रेशन पे. Correct? Wait a second. Malesh is complaining video is not clear. So people, please let me know. Are you facing the same problem? Is the video not clear to you as well? Okay. I guess सब ठीक हो चुका है. All right. चलो. तो as I was saying, सबसे पहले attention जाता है इस expression पे, which is 3 plus 2 iota times sine theta upon 1 minus 2 iota times sine theta, which obviously represents a complex number, in fact, a variable complex number. Let's denote it by the letter Z. क्यों बोला variable? क्योंकि theta change करते जाओगे तो complex number change होता जाएगा और इस complex number की एक खासियत है. What is that special feature attached to this complex number? That it is purely imaginary. And what do we mean by complex numbers being purely imaginary? That means that their real part is equal to a big fat 0. But right now, if you look at Z, you cannot individually segregate its real part and equate it with 0 and then work upon it. No, that's not possible right now. तो काम क्या करना पड़ेगा ना कि हमें इस given Z को
ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू इट्स स्टैंडर्ड लुक विच इज a प्लस आई बी, क्योंकि एक बार मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की शक्ल का दिखने लग जाता है तो वहां से मैं a को एक्सट्रैक्ट करके रियल पार्ट डिक्लेयर कर देती हूं और b को एक्सट्रैक्ट करके इमेजिनरी पार्ट डिक्लेयर कर देती हूं. करेक्ट? This much we all know. So let's work upon the complex number z described in this fashion and manipulate it, transform it to the standard format. Yes, you are right, Bhavya, absolutely on point. So that's what we want to do. Now obviously, what am I going to do here in order to convert it to a plus iota b type of look? Anybody? बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं. That's great. Veena, Tanish, Arpan, B, B, B. I can see loads of B in the chat. Okay, let's quickly reach the answer. What am I going to do, people? I will obviously multiply and divide by the conjugate of the denominator. Yes, Varsha, that's right. So 1 minus 2 iota sine theta का conjugate क्या होगा? Just replace I with minus I. You will get 1 plus 2i sine theta upon 1 plus 2i sine theta. Let's work upon simplifying the numerator, which is the multiplication of both these brackets. You will get 3 plus 6i sine theta plus 2i sine theta plus 4i square sine square theta. Whole upon, what is the denominator looking like? Cool. So Bhavya को भी समझ आ चुका है कि क्या करना था. Very good. You have a minus b into a plus b type of an expression which you know is equal to a square minus b square. That means 1 square minus 2 iota sine theta ka square. Okay, so what are you getting? 3 plus 8 iota times sine theta plus 4 iota square. Iota square you know is minus 1. So you will get minus 4 sine square theta here. Whole upon, what is this? 1 minus 4 iota square sine square theta. Again iota square is minus 1, so यहाँ हो जाएगा plus. एक और तरीका इसी डिनोमिनेटर में पहुंचने का ये था कि आप क्या करते ना, what you would have done, you would have treated 1 plus 2i sine theta as let's say z1 for example, and 1 minus 2 iota sine theta क्या बन जाता? उसका conjugate, which means z1 bar. And you know the property that z1 into z1 bar is mod z1 का square, right? तो mod z1 क्या हो जाता? Under root of 1 square plus 4 sine square theta. और इसका भी square, this is mod z1 ना, mod z1 का square क्या बन जाता? 1 plus 4 sine square theta, which is exactly what we have here. तो आप आइडेंटिटी यूज कर लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप z1 बार इज मॉड z1 का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो. बोथ आर करेक्ट. नाउ दिस गिव्स अस 3 minus 4 sine square theta upon 1 plus 4 sine square theta plus iota times 8 sine theta upon 1 plus 4 sine square theta. Obviously I have segregated the real and the imaginary part, क्योंकि यही तो एजेंडा था. And now I am done. Bingo people, we are done. हमारा एक्सप्रेशन a plus ib की शक्ल का बन चुका है. Congratulations. That means a is the real part of z, which I know was given in the question to be equal to 0. Okay, so what does this imply? कि भाई 3 minus 4 sine square theta upon 1 plus 4 sine square theta is 0. Yes, सुयश को बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं and I am glad to see that. Okay, चलो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डीप डाइव करके स्टडी करते हैं. डिनोमिनेटर का नेचर एक्सप्लोर करो. I want you to explore the nature of the denominator term. देखो क्या लिखा है, 1 plus 4 sine square theta. You all know sine square theta for any real theta is always non-negative. दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 sine square theta is non-negative for any real theta. If I add a 1 both side, I will get 1 plus 4 sine square theta is greater than equal to 1, which obviously is always strictly positive. That means मेरा denominator term हमेशा पॉजिटिव है, and something upon positive can give you 0 if and only if that something sitting in the numerator itself is 0. I hope this step is clear. तो this equivalently means कि numerator वाला term
is actually 0. Is this step clear? Yes, ये बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए. Okay, what does this give you? कि sin squared theta is 3 by 4. That means sin theta is plus minus root 3 by 2. This is the equation that basically we have to solve, keeping in mind the restriction imposed upon theta. Okay, what is that restriction? That theta should come from the open interval minus pi by 2 to pi. मतलब अब टास्क ये है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई ओपन इंटरवल जो है वहां से मुझे वो सारे थीटास कलेक्ट करने हैं जिसका साइन रेशियो या तो प्लस रूट 3 बाय 2 हो या तो माइनस रूट 3 बाय 2 हो. So let's take help of the graph of the sine function and mind it, our only area of interest is this. What is this? Open interval माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई. सिर्फ इस येलो शेडेड रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढेंगे ऑफ द साइन ग्राफ विथ the line y equals root 3 by 2 and with the line y equals minus root 3 by 2. Okay, achieve success I guess is talking about the geometry of complex numbers. Well, yesterday there was a session which was conducted जिसमें सारे के सारे concepts of complex numbers आपको रिवाइज कराए गए थे. It is there on the channel, please visit it and आप fast forward करके सिर्फ geometry का portion वहाँ पे आराम से देख सकते हो. It's there. Okay, cool. Here I have y equals root 3 by 2 and here I have y equals minus root 3 by 2. See, ये रहे दो intersection points corresponding to my yellow solid region. तो यहाँ से मिला मुझे theta 1, यहाँ से मिला मुझे theta 2. और y equals minus root 3 by 2 का अगर मैं intersection collect करूंगी तो मुझे एक ही point मिल रहा है corresponding to my yellow shaded region. So I am getting only one angle. Let's call it theta 3. क्या वैल्यूज है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 की? That's what we need to find. Correct? What is theta 1? Carefully observe. It's the unique acute angle जिसपे साइन रेशियो रूट 3 by 2 आता है. बच्चों का खेल है यार. क्या हो गया थीटा 1? Yes, 60 degrees. That means pi by 3 radian. What about theta 2? It will be pi minus theta 1, मतलब pi minus pi by 3, which is 2 pi by 3. Okay, and what is theta 3? ध्यान से देखो. Theta 1 and theta 3 are sitting symmetrically opposite to each other with respect to origin. मतलब अगर theta 1 pi by 3 units to the right of origin है, तो theta 3 pi by 3 units to the left of origin बैठा होगा. मतलब उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? Minus pi by 3. Once these three angles are decoded, all you have to do is add them. Isn't it? A क्या था? A was the set of all those thetas जिसके लिए ये वाला complex number is purely imaginary. हमने solve किया कि z is coming out to be purely imaginary in the desired interval only for three values of theta: pi by 3, minus pi by 3 and 2 pi by 3. So A is basically the set of these three angles. अगर मैं roster form में लिखती हूँ तो. और मुझसे पूछा गया था sum of all the elements sitting in set A, the sum will come out to be what? Pi by 3 minus pi by 3, which is 0, plus 2 pi by 3, that means 2 pi by 3. So people who were voting for option B are drastically wrong. Suyash is right, Varsha is right. Okay. So 2 pi by 3 is the answer, people. This was not at all a challenging question, I believe. इस तरीके के complex numbers को standard form में convert करना बहुत ही ज़्यादा बच्चों का खेल है and something that you work with a lot while preparing complex numbers. कि आपको something upon something type का expression दिया है, quotient of two complex numbers type का expression दिया है, तो how do you transform it to standard look? Multiply and divide by the conjugate of the denominator. ये तो पता ही होना चाहिए ना. This is absolutely basic and fundamental step. Okay, fine. Oh, so Suyash is saying कि इसको 2 stars मिल सकते हैं. I agree, Suyash. I completely second that क्योंकि ये काफी easy सवाल था. So we have started the session with some low-hanging fruits and धीरे 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 heavy weight lifting भी होगी. Let's move ahead to the next question. Check this out. Z is x plus iota y. It's a non-zero complex number such that z square is equal to iota times mod z ka square. Then z lies on what out of the given 4 options?
यहां पे सवाल ने खुद ही हिंट दे दिया कि भाई अब z को x प्लस आयोटा y रखो और ये जो गिवन इक्वेशन है इसको ट्रांसफॉर्म करो इनटू अ कार्टेशियन इक्वेशन इन्वॉल्विंग x एंड y। फिर उस इक्वेशन को आप स्टडी करके बताओ कि भाई वो लाइन की इक्वेशन है, अगर है तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस किस लाइन की इक्वेशन है? Is it the line y equals x or the real axis or the imaginary axis or the line y equals minus x? ठीक है, तो let's do that. Let's quickly do that. But before that, this is a concept booster question for you. Hi Santosh, tell me, if z is a complex number described as a plus iota b, then mod z is given by what out of the given 4 options? Quickly, quickly, quickly. A, B, C, D. Basic question. It is C, it is B. Oh my god, इसमें भी confusion. How can it be C? Tamil A is answering for C. C नहीं होगा. It will be B. Himanshu, why C? Why C? Look at this. भाई Z अगर A plus iota B की शक्ल का है तो mod Z होता है रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सिंपल एज दैट. पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना कि अगर z यहां बैठा है, लेट्स से, ओके, a प्लस आयोटा b फॉर्म का है, दैट मींस a कॉमा b उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, परपेंडिकुलर गिराओ, ये b है, ये a है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी ना उसकी लेंथ फ्रॉम ओरिजिन. ओके, नो डोंट से सॉरी बट जस्ट डोंट रिपीट दिस मिस्टेक. ये बहुत ही बेसिक सवाल था कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड पहली बात तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है, एंड हाउ इज इट गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो जैसे कि मैंने कहा मैं z की जगह x प्लस आयोटा y प्लग करने वाली हूँ. ओके, सो x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज आयोटा टाइम्स mod of x plus iota y का square. I just told you what is mod of x plus iota y? It is root over x square plus y square और मुझे इसका square करना है. Correct? Yes, Suyash is on the right track. Let's continue. This becomes x square minus y square plus 2 iota xy is equal to iota times x square plus y square. Correct? ओके, सो अर्पण इज सेइंग ऑप्शन गलत देखा था इसीलिए गलत आंसर दिया. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. इफ यू नो इट राइट, गुड फॉर यू. ठीक है, मुझे इसी बात से मतलब है कि आपको सही चीज पता होनी चाहिए. ऑलराइटी, नाउ आई एम गोना राइट इट इन अ नीट फैशन. नीट मतलब रियल और इमेजिनरी को सेग्रीगेट करके लिखना. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. Now study this equation, okay? It's of the form A plus IB is equal to C plus ID. Correct? Answers आने शुरू हो चुके हैं. It's option A for most people. Alright, so the line y equals x is what people are reporting as the answer. Shubh, Veena, Himanshu, Ishan is opting for C on the contrary. Okay, let's see. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? व्हेन देयर रियल पार्ट्स आर सेम एंड अलोंग विद दैट साइमल्टेनियसली देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो सेम. करेक्ट? सो दिस गिव्स यू x square minus y square is equal to 0 and along with that 2xy is equal to x square plus y square. अब ध्यान से समझो what is the relevance of this step. How do you interpret this step? आपके पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड बोथ आर होल्डिंग ट्रू. तो आप फर्स्ट इक्वेशन के आंसर निकालोगे, सेकंड इक्वेशन को इंडिविजुअली सॉल्व करके आंसर निकालोगे, और दोनों के आंसर्स में जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. समझ आई ड्रिल? तो लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन गाइस. व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? एनीबॉडी रिमेंबर्स? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? कोनिक्स पढ़ के आए हो? स्ट्रेट लाइन्स पढ़ा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पढ़ा है? What is this representing? X square minus y square equals 0. Yash is absolutely right. I will be addressing your answer. Come on. Y equals 0. That means x axis Varsha बोल रही है. Answer आने वाला है. Let's check.
Oh, now Varsha is saying no, y equals 0 is not the answer. Tell me, x square minus y square equals 0, what is it representing in the world of geometry? Parabola nahi, circle nahi. This is representing the combined equation of two straight lines. Nishchal is wrong, Veena is also wrong. What is it representing? The combined equation of two straight lines. What are those two straight lines? X plus y equals 0 and x minus y equals 0. Bhai, x square minus y square ko kholo na. Kya aayega? X plus y into x minus y equals 0. Product of two quantities is 0 provided at least one of them is 0. तो वहां से आपको दो equations मिल गई. एक x plus y equals 0, एक x minus y equals 0. So two lines are coming out to be the answers from the first equation. And when you solve the second equation, what do you get? You get x square plus y square minus 2xy is 0, which is equivalent to x minus y whole square is 0. Now, square of any real quantity is 0 if and only if that quantity itself is 0. Basic fundamental math. This gives you x minus y is 0 or y equals x. The first equation से दो straight lines answers आ रही थी. एक y equals x, एक y equals minus x, which you know are two straight lines intersecting each other at origin. One is inclined at an angle of 45 degrees with the positive x-axis. Another one is inclined at an angle of minus 45 degrees with respect to the x-axis. Correct? So they are lines which are equally inclined with the coordinate axis. तो पहली इक्वेशन से दो आंसर आ रहे थे, पर दूसरी इक्वेशन से एक ही लाइन आंसर आ रही है, which is y equals x. So what is the intersection? It is y equals x, and bingo! Locus of z is coming out to be y equals z, which is the straight line passing through origin, inclined at an angle of 45 degrees with the positive x-axis in the anti-clockwise sense. It's the graph of the identity function. So, many people in the chat gave the wrong answer to such an easy question. A is correct, B, C, D, everything is incorrect. Suyash was correct, oh yes. Varsha galti samajh aayi? Bhavna is also correct. All right. काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, so I'm glad you guys were able to solve it. It was quite simple. हमें एक इक्वेशन दी थी कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन्वॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. हमने उसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन निकाली इन द कार्टेशियन प्लेन, and then we interpreted its language. It was coinciding with option A. We can give it 3 stars. I'm gonna go with 2. I think this was easy. But ठीक है, 3 भी ठीक है. Prasad was also correct. Himanshu correct. Varsha is going with 2 stars. Suyash is going with 3 stars. Cool. As long as you are able to find it an easy question, great. Chalo, let's move on to question number 3. Very interesting, very insightful. It says sum of 1/62th power of the roots of the given cubic equation is what? Is it 2 or 3 or 4 or 0? Chalo, batao. Now come to this question, people. We are done with the previous question. What's gone is gone. Let bygones be bygones. Come to the present. Be mindful and solve this question. Option A is correct. Option D is correct. इतने mixed answers मत दो यार. इतना tough question नहीं है ये वाला भी. यहाँ पे इस question को crack करने के लिए you would need one tiny concept, which is this. Tell me. 1 omega and omega square, you all know, represent the 3 cube roots of unity. What is the correct option out of the given 4? Tell me. Legendary gamer को ये question बहुत hard लग रहा है. You will just see if you follow the correct steps. बहुत ही मक्खन की तरह solve हो जाएगा ये question. In fact ये इस standard का है भी नहीं. आप cubic equations solve कर चुके हो पहले in your former grades. That information will be used to crack this question. You will see that. B is for concept booster. Okay, 1 plus omega square is 1. Bhavya is reporting. And Himanshu is going with A. Robin goes with B. Yash goes with A. I want to see more answers. This is grabbing my attention. A, B, A, B. Yaar, neither is A correct.
Nor is B correct. Am I right? No. Actually A is correct but B is not correct. देखो यार, जब मैं कह रही हूँ कि 1 omega omega square are 3 cube roots of unity, that means they are actually solutions to what equation? Z cube equals 1, correct? That means 1 का क्यूब करो तो 1 आएगा, ओमेगा का क्यूब करो तो 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करो तो 1 आएगा. अगर ओमेगा का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, इतना पता चल गया. दैट मीन्स ओमेगा क्यूब की कोई भी इंटीग्रल पावर आपको 1 ही देगी ना यार. तो ओमेगा टू द पावर 3 times k where k is an integer is equal to 1. This is correct. B is not correct. In fact, the correct version of B is that sum of the 3 cube roots of unity is equal to a big fat 0, people. It's not 1, it's 0. Okay? आप यहाँ पे values डाल के add कर सकते हो. ओमेगा की value क्या होती है? -1 by 2 plus iota times root 3 by 2. Let me write it here. So omega is -1 by 2 plus iota times root 3 by 2, and omega square is -1 by 2 minus iota times root 3 by 2. और 1 तो 1 ही है. Add कर लो. Add कर लो 1 plus omega square. Answer will come out to be 0. Hi Astha, good to see you here. ओके, यस मानव, बी में अगर इक्वल टू 0 होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता. यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो चुकी है, बच्चों ने ये 1 को नहीं देखा है ना. दैट्स व्हाई बी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, डी इज इनकरेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट. चलो लेट्स अटैक. यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन गिवन है मुझे, एंड वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा दैट एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n has exactly n roots. Right now what I have is a cubic polynomial equation, so it will have exactly 3 roots. मुझे पता है complex roots occur in conjugate pairs, तो या तो तीनों roots alpha beta gamma real होंगे, या तो एक real root होगा और बाकी 2 complex roots होंगे. Yes? Okay? चलो, तो let's compute its roots from our very old traditional method जो हमने बचपन में सीखा है. पहले तो hit and trial method से कोई एक real number ढूंढो जो इस equation को satisfy करता है. It is 1. You can see 1 minus 2 plus 2 minus 1 is 0. So 1 is satisfying this equation. That means x minus 1 is a factor of this cubic polynomial जिसका नाम मैं convenience के लिए f of x रख देती हूँ. अब अगर मैं f of x को डिवाइड करती हूँ x minus 1 से, so I will get a quadratic polynomial as my quotient and answer the remainder will be 0. Yes, so yes, x minus 1 will be a factor. Okay? Ashu is also on point, correct. चलो, तो let's divide. f of x क्या है? x cube minus 2x square plus 2x minus 1. I want to divide it with x minus 1. I know the remainder will come out to be 0 for sure because x minus 1 is a factor of f of x. What I am in dire need of is the quadratic quotient, because then I will factorize that quadratic polynomial and get 2 linear factors from there. वहां से मुझे अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू मिलेगी. ओके, अल्फा की तो पता चल गई, चलो 1 है, बीटा और गामा मुझे वहां से मिलेंगे. So let's start. x into x square gives me x cube. This is minus x square minus plus. This goes, you have minus x square plus 2x minus 1. ठीक है? Now x into minus x gives you minus x square. This is plus x. So you have plus and minus. Then you have x minus 1. So plus 1, x minus 1. Answer is 0. Okay. So Yash, very good. यानी कि मैं f of x को लिख सकती हूँ x minus 1 into x square minus x plus 1. है ना? समझ आ गया? तो f of x equals 0 means all this equals 0. Now product of two quantities is 0 implies either one of them has to be 0. So what do you get in the next step? That x minus 1 is 0 or x square minus x plus 1 is 0. Now x minus 1 is 0 से तो x equals 1 मिल गया. What about this? What about this, people? So Yash, you are on fire. Literally, at your back. Good job. तो ये आ गया मेरा quadratic equation in x, correct? What is its discriminant? Can you calculate? Discriminant आ रहा है b square minus 4ac मतलब कि -3.
है ना, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -3 and if discriminant is coming out to be -3, that means it's negative and the leading coefficient is 1 which is positive, यानी कि this quadratic polynomial will actually look like an upward opening parabola which is strictly lying above the x-axis. Am I correct? This is the graph of x square minus x plus 1. Upward opening parabola which is strictly lying above the x-axis. यानी कि this will have absolutely no real roots. It will have both the roots as complex. और अगर आप इसके roots निकालना चाहते हो तो आप श्रीधराचार्य formula लगा लो, which is the quadratic formula. X will come out to be 1 plus minus root over b square minus 4ac which is -3 upon 2. So x comes out to be 1 plus minus 3 iota upon 2. Now wait a second, you have 1 plus or 1 by 2 plus 3 iota by 2 and you have 1 by 2 minus 3 iota by 2. इनकी शक्लें कुछ कुछ मिली जुली लग रही हैं. Do they look familiar to you? Do they look familiar to you? What does both these roots remind you of? Tell me. ये दोनों रूट्स को देख के क्या याद आता है? मानव इज करेक्ट. देखो, अगर मैं इनका नाम x1 x2 देती हूं तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं x1 x2. x1 मैंने बोला है 1 by 2 minus 3 iota by 2 and x2 मैं बोल रही हूं 1 by 2 plus iota times √3 by 2. हमें पता है what is omega. Omega is -1 by 2 plus iota times √3 by 2. है ना, -1 by 2 plus iota times √3 by 2. यानी कि this actually is minus omega. And what is omega square? -1 by 2 minus iota times √3 by 2. तो आप इस x2 का नेगेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर. तो x2 is actually minus omega square. So that means मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ x minus 1 into x plus omega into x plus omega square equals 0. This represents my f of x. है ना? सुयश, भव्या, बहुत बहुत बढ़िया. हिमांशु बहुत बढ़िया. मानव बहुत बढ़िया. इवन अर्पण, गुड जॉब. चलो, यानी कि मेरे पास 3 रूट्स आ चुके हैं. 1 minus omega square. सवाल पूछ रहा था sum of 162th powers of these 3 roots. तो 1 to the power 162 plus minus omega to the power 162 plus minus omega square to the power 162. This is what I have to calculate precisely. So 1 की power 162 is 1, not a problem. Minus 1 की power 162 is again 1 because 162 is an even number. You are left with omega की power 162. And you know as a matter of fact, जब भी हमें higher powers of omega calculate करनी पड़ती हैं, तो our agenda, our task is to actually reduce it using multiple of 3. Why? Because we know omega cube is 1. And fortunately 162 is a multiple of 3. It is 3 times 54. Correct? So I'm going to write this as 3 times 54. Similarly, minus omega square की power 162 क्या होगा? Omega square की power 162 मतलब omega की power 2 into 54 into 3 into 54 into 2. ओके, 162 को लिखा मैंने 3 times 54 and square का 2 आ चुका है. I'm going to write this as 1 plus omega cube की power 54 plus omega cube की power 54 into 2 which is 108. Right? I know omega cube is 1. 1 to the power anything is 1. So 1 plus 1 plus 1. 3 is your final answer sitting in option B, people. Yes, Varsha, you had told me. And therefore, I am addressing the fact that you are correct. Tamil is correct. Manav is correct. Thank you. Alrighty. Yes, Bhavya is also correct. बहुत बढ़िया. इस सवाल को काफी सारे बच्चों ने सही सॉल्व किया है. And you guys saw that अभी तक हम 3 सवाल कर चुके हैं from past year JEE Main and they all are based upon such basic concepts. है ना? तो बहुत हाई लेवल की पढ़ाई नहीं भी की हो,
बेसिक्स भी क्लियर हैं तो भी देयर आर चांसेस, देयर इज ह्यूज लाइकलीहुड कि आपको सवाल बन जाएगा. ओके, सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ दिस चैप्टर. चलो, now comes this question, extremely interesting. It says real part of z minus 1 upon 2z plus iota is 1. Point x comma y lies where out of the given 4 options? Tell me. Two options are saying circle, two options are talking about straight line. Which claim is correct? देखो यार, इस सवाल को बच्चे मोस्टली z को x plus iota y रख के सॉल्व करते हैं. Basically, this is the equation where they plug in z as x plus iota y and compute its equivalent version, which is an equation involving x and y. अब वो इक्वेशन सर्कल की होगी तो अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करेंगे, वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होगी तो अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करेंगे. बट अगर आपने इज्जत से मेहनत करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ा है तो हर बार बच्चों की तरह एक्स प्लस आयोटा वाई सब्स्टिट्यूट क्यों करना है यार? लर्न टू डील विद जेड ओनली, नो. हैव द मेच्योरिटी टू वर्क आउट विथ जेड इटसेल्फ, है ना. डरना नहीं है जेड से, जेड के साथ ही काम करना सीखना है. इसीलिए जानबूझ के मैं इस सवाल को z equals x plus iota y सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व नहीं करूंगी. दैट इज समथिंग वेरी किडिश टू डू इन ऑल क्वेश्चंस. हमने एक सवाल में पहले भी किया, आई एग्री, बहुत अच्छी बात है, बट हर बार उसे करना means that you are not mature enough to solve the question smartly. So see how I will be solving this question involving z only. I will only be using the fact कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? Tell me. I have to add it with its conjugate and divide by 2. Do you agree? We have learnt about this. Z plus z bar by 2 generates a real number which represents the real part of z. तो मुझे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, करेक्ट? Obviously. Real part of this complex number is 1. मतलब मैं ऑल्टरनेटिवली इसका इक्विवेलेंट वर्जन क्या लिख सकती हूँ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका कॉन्जुगेट अपॉन 2 is 1. Correct? That's what I'm going to write it. So z minus 1 upon 2z plus iota, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट. तो z minus 1 upon 2z plus iota का कॉन्जुगेट upon 2 is 1. Because this actually represents the real part of z minus 1 upon 2z plus iota, which is given to be 1. है ना? So yes, it's right. I'm not saying you are wrong. I just want to take a different approach and solve this question. मैं x plus iota y रख के नहीं solve करना चाहती because I want to tell you sometimes dealing with z only helps you in reaching the answer faster. ठीक है, तो हर बार एकदम blindly z को x plus iota y plug in करके solve करना शुरू मत कर दो. Many a times it makes your solution lengthy and it costs you a lot of time. Cool? चलो, so I'm going to send this 2 to the other side. What does this give me? Equal to 2. Correct? Now, let's work with conjugate. Conjugate of quotient is quotient of individual conjugates. Correct? ध्यान से देखना, what am I doing? So, इसका conjugate upon इसका conjugate. Now, conjugate has the power to break over difference and break over sum. तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से? z बार माइनस 1 बार अपॉन 2z का बार प्लस आयोटा का बार. राइट? व्हाट डू आई गेट? z बार माइनस 1 बार अपॉन 2z का बार प्लस आयोटा का बार. बट रियल नंबर का बार तो खुद रियल नंबर ही होता है, तो 1 का बार इज 1. 2z का बार क्या होगा? 2 टाइम्स z का बार. और आयोटा का बार क्या होगा? माइनस आयोटा. है ना? राइट? सो लेट मी write it again along with the conjugate expression. This is z bar minus 1 upon 2z bar minus iota. Now all you have to do is बहुत ही तसल्ली से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है. तसल्ली से, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ इसको सॉल्व करो. Let's start. The denominator becomes 2z plus 1 2z plus iota into 2z bar minus iota, and numerator is z minus 1 into z bar minus 1. Yes. Correct? Okay. So this is equal to 2.
चलते हैं z minus 1 into z bar minus 1, or rather LCM comes out to be 2z plus iota into 2z bar minus iota. न्यूमरेटर में मिल जाता है मुझे z minus 1 into 2z bar minus iota plus z bar minus 1 into 2z plus iota. है ना? आस्था को समझ आ चुका है. That's great. Okay, let's solve. This gives you 2z z bar minus iota z minus 2z bar plus iota plus 2z z bar plus iota z bar minus 2z minus iota whole upon 4z z bar minus 2 iota z plus 2 iota z bar minus iota square मतलब plus 1. है ना? ठीक है? 2z bar plus 2z bar gives you 4z bar plus iota minus iota cancel हो चुका है, minus iota z minus 2z मतलब z कॉमन निकालो, minus iota minus 2 minus 2z bar plus iota z bar, so plus z bar common, minus 2 minus plus iota. है ना? Got it? Equal to, send everything there. You will get 8z z bar minus 4 iota z plus 4 iota z bar plus 2. Let's quickly check once. So you have 2z z bar minus iota z minus 2z bar plus iota, and then 2z z bar plus iota z bar. All right, minus 2z and minus iota. है ना? Yes. Right now it's seeming to be long because I am solving it slowly so that I don't make any mistake. But you guys are pro at computations, right? Paper के वक्त आपको ये explain नहीं करना है. There's no two-way conversation going on with anybody. So you can just focus on solving और बहुत जल्दी हो जाएगा. Correct? When you simplify this equation, you know what it comes out to be. Just send everything to the right hand side. Send everything to the right hand side. And then simplify it. What do you get? Your equation looks like 4z z bar plus 2 minus 3 iota times z plus 2 plus 3 iota times z bar plus 2 equals 0. अब क्या करो? Throughout 4 से divide कर दो. What will you get? zz bar plus 1 by 2 minus 3 by 4 iota times z plus 1 by 2 plus 3 by 4 iota times z bar plus 1 by 2 equals 0. And boys and girls, this is representing the equation of a circle. Why? क्योंकि आप देख सकते हो कि z और z bar के जो coefficients हैं, they are conjugates of each other. तो मैं अगर इसको a treat करती हूँ तो ये a bar है. And I'm going to treat 1 by 2 as b. All right. This equation is perfectly matching with zz bar plus az bar plus a bar z plus b equals 0, जिसका सेंटर होता है minus a and radius होता है root over mod a square minus b. Correct? Suyash is on point, correct, with the center and the radius as well. तो center आ जाएगा minus a मतलब minus 1 by 2 minus 3 by 4 iota, which is equivalent to the point minus 1 by 2 comma minus 3 by 4, and radius will come out to be under root of mod a square minus b. है ना? What is mod a का square? 1 by 4 plus 9 by 16 minus b. b is nothing but 1 by 2. है ना? And this will come out to be LCM 16. You get 4 plus 9 minus 8. This gives you root 5 by 4. This is the radius. Radius is root 5 by 4 units. मुझे सवाल कह रहा था कि diameter is root 5 by 2 units. So twice of the radius is diameter. So yes, diameter is root 5 by 2 units. So your correct answer would be circle with radius minus 1 by 2 minus 3 by 4 and diameter root 5 by 2. So this is the correct, or rather I should say the approach involving Z. This is the approach that you have adopted to solve this question using Z.
ऑल्टरनेटिवली अगर आपका मन करे या उस वक्त आपको इंस्टिंक्टिवली लग रहा है कि यार z को x प्लस आयोटा y रख दो, बस बात खत्म, और कुछ नहीं चमक रहा, इतना टाइम भी नहीं है कि किसी और डायरेक्शन में सोचो, तो रख दो z को x प्लस आयोटा y. यू कैन सी z की जगह हर जगह x प्लस आयोटा y रख दिया है. कैन यू सी दिस एक्सप्रेशन? एंड देन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट, multiply and divide by the denominators conjugate. Okay, multiply and divide by denominators conjugate, again simplify, so that you are able to catch hold of the real part of this complex looking complex number. Are you understanding? तो इस पूरे एक्सप्रेशन, ये जो रियल पार्ट के अंदर लिखा है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास समथिंग प्लस आयोटा टाइम्स समथिंग आएगा. उसके रियल पार्ट को उठाओ और इक्वेट कर दो 1 से, है ना, इक्वेट कर दो 1 से एंड सिंप्लीफाई इट, एंड दैट विल गिव यू x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0 as the required equation, which you know represents a circle with center minus g comma minus f and radius under root g square plus f square minus c. All right, इससे भी आंसर आ जाता. Cool. So correct answer is D. It is definitely not a straight line. It is a circle. पर center क्या है? -1/2 comma -3/4. That's why A is incorrect and D is correct. All right. ठीक है, समझ आ गया? चलो, let's move on to the next question. But before that, this question is asking for stars. What do you think? How many stars should I go with? फटाफट बताओ. How many stars should I go with? I am going to go with 3 stars. This question was not tough. I'm going to go with 3 stars. Dileep is going with 1 star. उसको बहुत ही simple लगा है. Great to know that. Naman is going with 5 stars. Tamil A is going with 3 stars. Varsha says 2. Tech Apex is saying 4. बहुत ज़्यादा variety है. बहुत ज़्यादा variety है. But any which way, whether you found it easy or tough, you should know how to tackle such questions. That's the major takeaway. All right. चलो, आ जाओ इस सवाल पे. Mod of z minus iota equals mod of z minus 1, where iota is root over -1 represents what out of the given 4 options? बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है. It is directly based upon a concept. Let's talk about it. देखो, अगर मैं iota को एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेती हूँ, तो z1 एक्चुअली में कैसा दिखेगा? 0 प्लस iota. यानी कि ज्योमेट्रिकली ये किस पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा? 0,1. इसका नाम q रख देते हैं. ठीक है. सिमिलरली मैं 1 को अगर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मानती हूं, तो ये एक्चुअली में किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? यूनिटी, राइट? 1 प्लस 0 आयोटा. 1 प्लस 0 आयोटा एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली किस पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है? 1,0. तो 1,0 को मैं p मान लेती हूं. Wait a second, this pen is not working. Yeah, 1,0 को मैं p मान लेती हूं. ठीक है. अब देखो, अब इक्वेशन की शक्ल को इंटरप्रेट करो. You have mod of z minus z1 equals mod of z minus z2, which represents, tell me, which represents what? Mod of z minus z1 equals mod of z minus z2. अभी कोई ज्योमेट्री की बात कर रहा था ना यहाँ पे? Please recall the first geometric figure that you learn to represent in terms of the complex variable z is this. What is this? What is this? It is the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining z1 and z2. Right? So let's move on to the Cartesian plane. मेरे पास z1 है, what? 0 प्लस आयोटा, मतलब क्या आयोटा? उसको मैं p पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रही हूं. No, q पॉइंट से. So this is your z1. It is actually iota. It is sitting 1 unit away from origin along the positive y-axis. And what is your z2? Z2 is actually 1. It is represented by point p. है ना? 1,0. This is also sitting 1 unit away from origin along the positive x-axis. अब PQ की जो segment है, this is the PQ segment. इसका perpendicular bisector will be my answer. है ना? No, not a circle. Not a circle, Himanshu.
Shibeen is right actually, but I wanted to know in general what geometric figure it represents. Straight line, but what is the nature of that straight line? Mod of z minus z1 equals mod of z minus z2 represents the equation of a straight line, which actually is the perpendicular bisector of the line segment joining z1 and z2. ठीक है, अब ये जो PQ segment है, इसके perpendicular bisector की equation ढूंढनी है हमें, है ना? ध्यान से देखो, ये PQ segment is making an obtuse angle with the positive direction of x-axis. That means इस PQ segment का slope negative होने वाला है पक्का से, है ना? यानी कि अगर मैं इसका perpendicular bisector बनाऊंगी तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, लाइन दिखेगी इस तरीके की, पक्का से उसका स्लोप पॉजिटिव होने वाला है. क्यों? क्योंकि वो अक्यूट एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो अब ऑप्शंस पे एक सेकंड जाएं तो सर्कल तो ये पक्का नहीं है. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1, एक सेकंड, सर्कल पक्का नहीं है तो सी भी गलत हो गया. जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि PQ सेगमेंट का स्लोप नेगेटिव है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप, जैसे कि हमने विजुअलाइज किया, पक्का से पॉजिटिव होगा क्योंकि वो अक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ. तो नेगेटिव स्लोप तो हो ही नहीं सकता ना बॉस. तो बी ही करेक्ट आंसर है. बी इज यस. सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बी सही आंसर है. तो यहाँ पे तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से ही सही आंसर आ गया. आई डोंट हैव टू कैलकुलेट द एंटायर solution, entire answer. Okay, but still we will. So let's start. PQ segment का slope क्या है? Difference of the y coordinates upon difference of the x coordinates. Correct? So basically 0 minus 1 upon 1 minus 0 मतलब -1. तो slope of the PQ segment is coming out to be -1. Okay, and slope of the perpendicular bisector line will come out to be what? Negative reciprocal of -1, which is 1. Just give me 1 minute, guys. I'll have to get away from screen. I just need 1 minute. Alrighty folks, so many of you all have reported me with the answer, but let me just go about it once again. I'm just waiting for the pen. This one is not working, so please be patient with me. So PQ segment का slope आ रहा था -1 and the perpendicular bisector is actually a line which is perpendicular to the PQ segment and it bisects it into two equal halves, right? That means this is equal to this. So the midpoint is going to have coordinates what? Half comma half. Half comma half midpoint के coordinates आ गए. अगर मैं इस L line को perpendicular bisector कह रही हूँ and I'm saying it's perpendicular, that means if PQ segment has slope -1, L is going to have its slope as negative reciprocal of -1 मतलब कि 1, है ना? तो इसका slope आ चुका है 1. Slope पता है आपको, इस line पे बैठा एक point, उसके coordinates पता है आपको, तो आप
point slope form से उसकी equation निकाल सकते हो, which will be y minus half equals 1 times x minus half, which results in y equals x. So that is your answer. The equation of the perpendicular bisector of the line segment joining 1 and iota is actually the graph of an identity function, which is a straight line passing through origin inclined at an angle of 45 degrees with the positive x-axis in the anti-clockwise sense. Hi Ali. Hi Sandeep. Good to see you guys. Chalo. हो गया ये सवाल. It was pretty simple. The only result I was expecting from your end to come, which did not come, and I am disappointed about it, is that mod of z minus z1 equals mod of z minus z2 represents the equation of a straight line, which is not just any random straight line. It's the equation of a perpendicular bisector, the unique line which acts as the perpendicular bisector of the line segment joining z1 and z2. Cool? That's great, Manav. I guess अब ये सारे सवाल आपके लिए एकदम, you know, left hand thingy बन जाएंगे, isn't it? You will be able to solve them very, very easily. All right, let's move on to the next question. Let z1 and z2 be two complex numbers satisfying mod z1 equals 9 and mod of z2 minus 3 minus 4 iota equals 4. Then the minimum value of mod of z1 minus z2 is equal to what? Quickly. Chalo. Quickly. ठीक है, बताओ. Mod z1 equals 9 is reminding you of what equation? Mod z equals 9. You know it represents a circle centered at origin radius 9 units. मतलब z1 अगर mod z equals 9 की equation को satisfy कर रहा है, means z1 is lying on the circle centered at origin radius 9 units. Correct? दूसरी equation को देखो. यहाँ पे लिखा है mod of z2 minus 3 minus 4 iota equals 4. यहाँ से मैं अगर माइनस साइन कॉमन निकालती हूँ तो what will I get? 3 plus 4 iota equals 4. And this is actually representing a fixed complex number, let's call it z0, जिसका equivalent version is 3,4. है ना? Now, what does this mean? Mod of z minus z0 equals r means a circle centered at z0 radius r units. The mod of z minus 3 plus 4 iota means distance of z from 3, 4, which is equal to r. It represents a circle centered at 3, 4, radius 4 units. And z2 is a point sitting on this circle. So let's start visualizing. सबसे पहला circle है mod z equals 9. It's a big circle. Let me call it circle number 1. And this is representing circle centered at origin radius 9 units. Next is the circle centered at 3, 4 radius 4 units. मुझे कैसे पता ये circle बड़े circle के अंदर ही बनेगा? भाई 3, 4 का distance calculate करो origin से. It comes out to be under root 3 square plus 4 square, which is 5. And 5 is less than 9. है ना? That means 3, 4 is actually lying inside the circle. Correct? Still, the second chotu circle that I have drawn, I'm not sure it will look like this or not. Center पक्का अंदर lie करेगा, पर इस circle का 4 radius रख के अगर मैं उसको draw करूँगी, तो will it perfectly look like this only? Manav is rocking here, huh, Manav? Good to see that. जानने के लिए कि दोनों first और second circles आपस में interact कैसे करेंगे, what do? We calculate 3 quantities. Distance between the centers, sum of the radii, and mod of difference of the radii. Alright? Let's see. So, you have the first circle and second circle with you. Let's calculate distance between the centers. What is it? C1, C2. Under root 3 square plus 4 square, which is 5 units. Next thing we'll calculate is sum of the radii, which is 9 plus 4, that is 13. And next thing which we'll calculate is mod of difference of the radii, which is 9 minus 4, that is again 5 units. What are you able to observe?
What are you able to observe? That distance between the centers is equal to the mod of difference of the radii, which implies that both the circles will meet each other internally at a single point, and this is how the figure will actually look like. Am I correct? So both the circles are going to meet each other internally at a single point. Let's call it P. This is going to be the actual scenario. Now Z1 is any point sitting on the first circle, and Z2 is any point sitting on the second circle. I want to calculate the minimum distance between Z1 and Z2. दो points के बीच में distance minimum कब होता है? When they are as close as possible. At the max कितनी पास आ सकते हैं दो points? They can coincide with one another, right? And that's the scene. Can you see that? अगर मैं P को Z1 लूं, ले सकती हूँ क्योंकि P is lying on the big circle, और इसी को मैं Z2 लूं, again ले सकती हूँ because P is also lying on the छोटू circle. Then Z1 and Z2 will be equal to the same point, and hence the distance between them will be 0. No, Suyash, you are wrong. They will not be parallel. ठीक है? अस्कर ने सही आंसर दे दिया है, हिमांशु ने सही आंसर दे दिया है. Correct? So Z1 minus Z2 actually becomes equal to Z1 minus Z1, which is 0. है ना? And mod 0 is 0. So minimum distance between these 2 points is 0. So D is the right answer. Easy peasy lemon squeezy question. सबसे पहला टास्क तो था आइडेंटिफाई करना कि यार सर्कल्स को इन्वॉल्व करना है. Mod Z equals R, mod Z minus Z not equals R. These two represent the equations of circles. So यश को बाद में समझ आया. Sakshi, you are also right. Okay? Chalo. Let's talk about this question. Let's solve this. Desh, Deepak, what is your question? What is your question? Can you please retype it? I kind of missed it and then I'm going to reply definitely. चलो इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले तो ध्यान से देखो 2π/9 is the angle universally sitting and this is not that good looking an angle. मैं इसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ. π/9 gives me 180/9, that is 20. 20 into 2 is 40. So I'm going to deliberately write this as 1 plus, let me write it here, 1 plus sine 40 plus iota times cos 40 upon 1 plus again sine 40 minus iota times cos 40. Mind it, मेरा टास्क है z cube फाइंड करना. You can look at this. I want to find z cube. मैंने इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को z माना हुआ है. ठीक है? Euler form. Do you literally need Euler form? ध्यान से देखो. यहाँ पे मुझे साइन प्लस आयोटा कॉस दिख रहा है, लेकिन जैसे कि तमिल ए ने मेंशन किया, ऑयलर फॉर्म से पहले पोलर फॉर्म याद आ जाता है मुझे, जो कहता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की शक्ल के बारे में कुछ, राइट? तो जनरली हमें आयोटा साइन के साथ देखने की आदत है, ना कि कॉस के साथ. डू यू अग्री? राइट. दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगी, आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ को फंक्शन. उसकी मदद से मैं आयोटा को साइन के साथ लेके आ जाऊंगी और कॉस के साथ नहीं. कॉस को मैं इंडिपेंडेंट कर दूंगी आयोटा से. कैसे? एज आई सेड, आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ को फंक्शंस. साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ ईच अदर. मतलब क्या है मेरा कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो आई कैन राइट साइन 40 एज cos of 90 minus 40, मतलब cos 50. So sin 40 is same as cos 50. Do you agree? Similarly, cos 40 is same as sin 50. यहाँ पे भी sin 40 is same as cos 50 and यहाँ पे cos 40 is same as sin 50. देखा कितने स्मार्टली मैंने आयोटा को cos से हटा के sin के साथ एडजॉइन कर दिया. मानव is absolutely right. 90 theta relation. Okay, C is the correct answer. That's what you feel, Manav. We will check that in a short while. अब यहाँ पे 1 plus cos 50 देख के क्या चमकना चाहिए? Yes, 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. तो 1 plus cos 50 will become 2 cos square half of 50, that means 25. अब एंगल हाफ हो ही रहा है तो साइन का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं.
है ना, ताकि थ्रू आउट हमारे पास सेम आर्ग्यूमेंट, सेम एंगल क्रिएटेड रहे. तो sin 50 को मैं लिख सकती हूँ 2 sin 25 cos 25. Similarly, in the denominator, 1 plus cos 50 becomes 2 cos square 25 minus iota times 2 sin 25 cos 25. This 2, this 2, this 2, this 2 cancels out. ध्यान से देखना, cos 25, cos 25, cos 25, cos 25. न्यूमरेटर से एक cos 25 निकला, डिनोमिनेटर से एक cos 25 कॉमन निकला, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि 25 डिग्रीज एक अक्यूट एंगल है एंड कॉस रेशियो ऑफ एन अक्यूट एंगल इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट? पॉजिटिव को मैं कैंसिल कर सकती हूँ. कूल. सो व्हाट विल आई बी लेफ्ट विथ? cos 25 plus iota times sin 25 whole upon cos 25 minus iota times sin 25. This is my z. Again I am reminding you, हमको z cube calculate करना है. Manav is saying I'll go with C as well as D because both are same. Oh yes, both are same. Let me change this. What about this now? Then what's your correct answer? C काफी बच्चों ने आंसर दे रखा है, but please I've changed option C. चलो, अब इसको मैं क्या करूं? What should I do? You know it. Something upon something टाइप का एक्सप्रेशन दिखे तो what is the go-to option? What comes to the rescue? Rationalization. Multiply and divide by denominators conjugate. So multiply with cos 25 plus iota times sin 25 and divide by the same cos 25 plus iota times sin 25. है ना? ऊपर क्या बन गया? cos 25 plus iota times sin 25 का square whole upon a plus b into a minus b is a square minus b square. So cos square 25 minus iota square sin square 25 मतलब plus sin square 25. You know cos square theta plus sin square theta is 1, so complete denominator is equal to 1. है ना? यानी कि z क्या आ चुका है मेरे पास? cos 25 degrees plus iota times sin 25 degrees whole to the power 2. I want to calculate z cube, so raise both sides to power 3. What does this give you? 6 as the final power. And at this point of time, yes Suyash, very very good. At this point of time, what should come in your mind? Cos theta plus iota sin theta raised to the power 6. What should come into your mind जब भी cos theta plus iota times sin theta टाइप के एक्सप्रेशंस की हायर पावर होती है, तो what comes to the rescue? Yes, but थोड़ा और सोचो. थोड़ा सा और सोचो. Anybody? De Moivre's theorem is what I'm talking about. Whenever cos theta plus iota sin theta is raised to an integral power, that integer has the power to move inside the bracket and get multiplied with the angle. यहाँ पे भी क्योंकि 6 is an integer, it will jump inside the bracket and will get multiplied to 25 degrees. Okay, so what will this give you? Cos of 25 into 6, which is 150, plus iota times sine of 25 times 6, which is again 150. So cos 150 comes out to be cos of 90 plus 60, which is minus sine 60, plus iota times, what is this? Sine of 150, sine of 90 plus 60, that means cos 60. So you get minus root 3 by 2 plus iota by 2. You take out minus 1 by 2 common, you will be left with root 3 minus iota, which is sitting in option D. Varsha, बहुत बहुत बढ़िया. ठीक है, so D is the correct answer if I change this to plus. Cool. And how many stars do you think this question deserves? Manav got it right? Bingo. Tell me how many stars this question deserves. D was correct. Yes, Suyash, absolutely correct.
I am also going to go with 3 stars. I second what you said. 2 stars, 3 stars is correct. Askar 4 nahi, itna bhi tough nahi tha, and Kanak is going with 5 stars. No, it doesn't deserve those many stars. Chalo, let's move on to this question. It says, let a complex number z such that mod z is not equal to 1 satisfy this very log inequality. What is the largest value of mod z? Tell me what is the largest value of mod z. यहाँ पे बहुत ज़्यादा close observation की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे log function in the complex variable, basically complex log function की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे real log function की बात हो रही है. कैसे? इतने सारे z दिख रहे हैं मैम इनपुट में, ऐसे कैसे? ध्यान से देखो, z नहीं है, mod z है. Mod z is distance from origin. It is a real number, that too non-negative. हमें पता है कि log, जो real log function होता है, उसका input क्या होता है? What is its domain? Set of all strictly positive reals. And we will check that here. You can see, देखो mod z की value 1 नहीं दी है ना? And mod z you know is always non-negative. Correct? 1 नहीं है, it's non-negative for sure. तो mod z minus 1 मतलब कि 0 नहीं है. mod z 1 नहीं है मतलब mod z minus 1 0 नहीं है. It is some real number. और उसका स्क्वायर क्या होने वाला है? Strictly positive. क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव. अगर वो 0 नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर तो पक्का पॉजिटिव है. व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? इट इज mod z plus 11. भाई mod z अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों साइड 11 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? यही मिलेगा ना. मतलब न्यूमरेटर इज ऑल्सो पॉजिटिव. पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव. दैट मीन्स ये जो इनपुट है ना, इनपुट है, ये एक्चुअली पॉजिटिव रियल नंबर है ना? सुयश का आंसर भी आ चुका है. आई एम वेरी वेरी ग्लैड योर आंसर इज एक्चुअली करेक्ट. ठीक है, तो इनपुट मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है. यहां पे z दिख रहा है, लेकिन द कैच ऑफ द क्वेश्चन इज कि ये रियल लॉग फंक्शन पे बेस्ड है. ठीक है, ओके. बेस देखो, व्हाट इज द बेस? बेस इज अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी. हमें पता है जब भी बेस फ्रैक्शन की तरह दिखता है तो लॉग, रियल लॉग फंक्शन का ग्राफ इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना? क्या लिखा है? लॉग ऑफ इनपुट इज लेस देन और इक्वल टू 2. ठीक है, सपोज दिस इज 2. एट व्हाट इनपुट डू यू थिंक दिस फंक्शन इज गोइंग टू अटेन द वैल्यू 2? कैन एनीबडी टेल मी? लेट्स से x इज द इनपुट जिस पे लॉग का आंसर 2 आ रहा है. तो क्या होगा x? 1 by root 2 base to the power 2, which is 1 by 2. That means this is 1 by 2. At 1 by 2, log is attaining the value 2. So if log is less than equal to 2, see, at half, log is equal to 2. And at all the inputs greater than half, you can see log is strictly less than 2. So by log of an input is less than or equal to 2 when the input is greater than or equal to half. Yes. Absolutely correct. Okay, so this equivalently means that input, that means mod z plus 11 upon mod z minus 1 का square is greater than equal to half. And I told you numerator positive है, denominator positive है, बिंदास क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, let's go ahead and do that to simplify this equation. हमें mod z की मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट? प्लीज कीप दैट इन माइंड. वी नीड mod z की minimum value. This will give us 2 times mod z plus 22 is greater than equal to mod z का square plus 1 minus 2 mod z. Okay, bring everything to the left. You get 4 mod z plus 21 minus mod z का square is greater than equal to 0. Multiply both sides by a minus sign. This will give you mod z का square minus 4 mod z minus 21 is less than equal to 0. mod z को t की तरह ट्रीट कर लेते हैं. You get t square minus 4t minus 21 is less than equal to 0 where t is mod z. And you know, as a matter of fact, it's always non-negative. Hi Rajiv, welcome. Okay. What will this come out to be when you factorize? Very very simple guys. minus 4 को आप लिख सकते हो minus 7 plus 3. तो t minus 7, t plus 3. These are the factors less than equal to 0. How do you solve?
such an inequality, product of two linear factors less than equal to 0? दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो, -3 and 7, है ना? at 7 the left hand side expression will be equal to 0, so include it. At -3 also left hand side expression will be equal to 0, but t is not allowed to be equal to -3 because t is mod z, which is always non-negative. It can never be negative. So hollow circle here. Now plug in any value greater than 7 in the left hand side expression, you will get a positive answer. Here you will get negative and here also you will get negative. I want what? Less than equal to 0. Matlab this region will be selected. Got it? Okay, but 0 is going to sit somewhere here. And I know t is also greater than equal to 0. Intersection क्या आ रहा है? And 0 will be included because at 0 my left hand side expression is giving me a negative answer. And I want less than or equal to 0. So 0 will be included, 7 will be included, and everything sitting between 0 and 7 will be included. So mod z will actually be greater than equal to 0, less than equal to 7, or I can say mod z will belong to the closed interval 0, 7. So it will be at least 0 and at most 7. मतलब 0 उसकी मिनिमम वैल्यू है and 7 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. No, there was no need, I agree, but अगर हम इसको रियल लॉग से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ग्राफिकली विजुअलाइज करके कई बार गलती करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है. प्रॉपर्टीज को रटने से बेटर है ग्राफ देखो, उसी वक्त निकालो कि क्या सिचुएशन हो रही है मैथमेटिकली एंड देन वर्क अपॉन इट. बट इफ यू आर वेरी मच प्रो विथ प्रॉपर्टीज देन यू डोंट नीड ग्राफ. ठीक है? All right. So what is the correct answer? Yes, Varsha, C is the correct answer. 7 is the maximum value. Cool? Chalo. Let's move on to this question. Quite an easy one. Z is root 3 by 2 plus iota by 2. Then what is the value of this entire expression? ध्यान से Z की शक्ल देखने की जरूरत है बॉस. Z किसकी याद दिला रहा है? Z किसकी याद दिला रहा है? It somewhat looks like omega, but not exactly. What was omega? Omega was -1 by 2 plus iota times root 3 by 2. और अभी जो मुझे Z दिया हुआ है, it is root 3 by 2 plus iota by 2. I want you to compare both of them. I want you to compare both of them. आपको दिख रहा होगा कि iota root 3 by 2 के साथ बैठा है. तो एक काम करते हैं ना, Z में आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर देते हैं ताकि रूट 3 by 2 के साथ किस तरह आयोटा आ जाए. नो प्रॉब्लम. सो आई विल मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा. तो डिवीजन वाले आयोटा को मैं बाहर रख लेती हूँ और अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो आई विल गेट आयोटा टाइम्स रूट 3 by 2 प्लस आयोटा स्क्वायर बाय 2. दिस गिव्स यू 1 by आयोटा रूट 3 by 2 आयोटा माइनस 1 by 2. करेक्ट? And what is this? 1 by I as it is. Minus 1 by 2 plus iota times root 3 by 2 is nothing but omega. मतलब कि Z की वैल्यू आ चुकी है क्या? हमने अभी देखा ओमेगा बाय आयोटा. ओमेगा बाय आयोटा. एक बार Z की वैल्यू ओमेगा बाय आयोटा मिल गई तो आपको सिर्फ इस एक्सप्रेशन में रखना है और कुछ नहीं करना. So let's start. 1 is as it is. Iota times, let me write it here. 1 is as it is plus iota times z मतलब omega by iota plus z to the power 5 मतलब omega की power 5 upon iota की power 5 plus iota into z की power 8 means omega की power 8 upon iota की power 8. All of this raised to the power 9. है ना? cos 3 pi plus sin 3 pi. Okay, let's see. देखो iota cancels out, है ना? You are left with 1 plus omega here. What is omega की power 5? You have to break it with the multiple of 3. You have to break it with the help of multiple of 3. 5 को आप लिख सकते हो as 3 plus 2. So this comes out to be omega cube into omega square. But omega cube is 1. 1 into omega square is omega square. Upon iota की power 5. iota की powers कैसे खेलती हैं? आयोटा की पावर 4 आपको पहली बार 1 देता है, राइट? तो आप 5 को यानी कि 4 plus 1 लिख सकते हो. प्लस 1 मतलब कि इंटू आयोटा. आयोटा की पावर 4 अगेन इज 1. 1 times आयोटा इज आयोटा.
प्लस आयोटा एज इट इज. व्हाट इज ओमेगा की पावर 8? अगेन 3 के मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश करो. 8 को मैं लिख सकती हूँ 6 + 2. ओमेगा की पावर 6 बन जाएगा 1, राइट, एंड बचेगा क्या? ओमेगा स्क्वायर. एंड आयोटा की पावर 8 को मैं 4 के मल्टीपल्स की मदद से तोड़ती हूँ. तो 8 इज नथिंग बट 4 × 2 एंड आयोटा की पावर 4 इज 1. 1 का स्क्वायर इज अगेन 1. करेक्ट. ऑल ऑफ दिस टू द पावर 9. अब देखो क्या लिखा है, आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और उसके पहले का टर्म है ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा. तो एक काम करते हैं ना, लेट्स प्ले स्मार्ट, थोड़ा दिमाग लगाते हैं. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा कर देते हैं यहाँ पे. दिस आयोटा स्क्वायर गिव्स यू -1 which will come here and this will get cancelled out, है ना? ओके, -1 -1 -1. मुझे भी लग रहा है -1 इज द आंसर, क्योंकि यहाँ लिखा है 1 + आयोटा की पावर 9 is what you have to calculate, and this is the point where what comes to the rescue. Sum of the 3 cube roots of unity is 0, people. Remember? यानी 1 + ओमेगा को मैं कॉन्फिडेंटली -ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ. So this comes out to be -ओमेगा स्क्वायर की पावर 9. -1 की पावर 9 is -1 and ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 means ओमेगा की पावर 18, but 18 thankfully is a multiple of 3. ओमेगा की पावर 3 is 1. 1 to the power 6 gives you 1. So -1 is the correct answer. मानव, अस्कर, बहुत बहुत बढ़िया. सुयश, बहुत बहुत बढ़िया. ठीक है, got it. So D is correct. चलो, moving on to this question. फटाफट से come to this question and solve this. Tell me what will be the answer. If Z and omega are two complex numbers such that उनके प्रोडक्ट का mod is 1 and उनके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस is π/2, then comment upon Z into omega bar and Z bar into omega. भाई कोई एक भी चीज आ गई तो उसका कॉन्जुगेट दूसरी है ना. Z into ओमेगा बार का कॉन्जुगेट क्या है? Z bar into ओमेगा. तो हम दोनों में से किसी एक को निकाल लेंगे, फिर उसके कॉन्जुगेट को निकाल लेंगे बड़े आराम से, है ना? पीपल आर गोइंग विद D हियर. लेट्स चेक. अब इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं. व्हाट आई लाइक द मोस्ट, which I feel is very effective, very easy to understand and quite systematic as well, takes less time as well, is this what I'm going to do before you. See, first of all, let's recall कि mod of the product is product of individual mod. Mod has the power to break over product. So you get mod Z into mod omega is 1. यहाँ से मैं mod Z को लिख सकती हूँ 1 upon mod omega, है ना? यानी अगर मैं mod ओमेगा की वैल्यू को r ले लूं तो mod Z आ जाएगा 1/r. दैट्स फॉर श्योर. ठीक है. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज π/2. तो मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z यानी कि आई कैन राइट इट एज π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा. अब आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा को मैं थीटा मान लेती हूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगा π/2 प्लस थीटा. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे Z और ओमेगा. ओमेगा की मैं बात करूं तो आई एम अवेयर ऑफ इट्स रेडियस एंड आर्ग्यूमेंट. तो इन द ऑयलर फॉर्म आई कैन एक्सप्रेस इट एज r e⁻i थीटा, है ना? यस सुयश, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यस, वेरी वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट Z? Z का रेडियस इज 1/r एंड आर्ग्यूमेंट इज π/2 प्लस थीटा. मतलब आई कैन राइट दिस एज 1/r e⁻i टाइम्स π/2 प्लस थीटा. एक बार ओमेगा और Z का एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया तो Z बार इंटू ओमेगा, Z इंटू ओमेगा बार, जो सवाल पूछ रहा है आप निकाल सकते हो. लेट्स कैलकुलेट Z इंटू ओमेगा बार. ऑल राइट, व्हाट इज दिस? Z is 1/r e⁻i टाइम्स π/2 प्लस थीटा. दिस इज Z इंटू ओमेगा का बार. ओमेगा का बार होगा क्या? ओमेगा का बार होगा r as it is e⁻i टाइम्स माइनस थीटा. डू यू अग्री? कॉन्जुगेट लेने पे क्या मिलता है? मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. तो रेडियस चेंज नहीं होता पर एंगल क्या बन जाता है? पहले थीटा था तो अब माइनस थीटा. इतना ही चेंज होता है, राइट? Okay, so r and r cancels out. You have e⁻i times π/2 plus theta minus theta. This cancels out. You're left with e⁻i times π/2, which gives you cos π/2 plus iota times sin π/2. 0 plus iota.
दिस इज द आंसर ऑफ z इंटू ओमेगा बार. यानी कि अगर मैं z ओमेगा बार का बार ले लूं तो दिस विल बी z बार ओमेगा विच इज आयोटा का बार विच इज माइनस आयोटा सिटिंग इन ऑप्शन सी. ओके, सो दिस इज व्हाट z बार ओमेगा. All right, this is also z bar omega, this is z omega bar and z omega bar. So you can see out of the 4 options, bar बहुत clear नहीं था तो अब मैंने draw कर दिया है. z bar omega की value minus I आ रही है. So सुयश, वर्षा ने सही जवाब दिया है. Okay, C is the correct answer, people. Easy question था and this is the technique that I probably like the most to solve such questions. ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एक की डिपेंडेंसी जो दूसरे के ऊपर है उसको यूज करके उसका रेडियस और थीटा निकाल लो, मतलब आर्ग्यूमेंट और रेडियस निकाल लो. देन यू एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली इन द ऑयलर फॉर्म और फिर जो सवाल पूछ रहा है बहुत आराम से निकल जाएगा. ओके, सो वी आर थ्रू विथ आवर 10 क्वेश्चंस एंड विद दिस इट्स अ रैप. I hope after attending today's entire session, after going through so many previous year questions, you would have definitely realized that no, complex numbers is not that hard a nut to crack. If you invest good quality time in understanding the chapter, all your concepts, results, fundamentals are crystal clear, then any question that comes your way, you will be able to crack it, that's for sure. Keep in mind, people, tomorrow you have a chemistry session lined up at 7 p.m. sharp. On this note, I'm going to take your leave. It's me, Bhoomika, signing off. Please take care, stay safe. Thank you so much. Bye-bye.